अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैंने कहा कि सिंस आई एम अ बेकर तो मैं एक ट्यूटोरियल कर लूँ केक का, केक डेकोरेशन का। ये मेरे पास एक 48 केक है। इसके ऊपर फ्लोरल अरेंजमेंट आएगा डायगनली, यहाँ से टॉप से शुरू होएगा एंड इट विल गो डाउन यहाँ तक। This cake is almost 10 pounds. The amount they ordered was 9 pounds. तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं. It's better to give something extra. Customers पर अच्छा impression पड़ता है. तो let's go ahead and start with the decoration. ये हमारे पास इस वक्त एक canvas है, इसको हमने fill करना है. We have to make it look beautiful. इधर आप जैसे देख रहे हैं, I have some decorative elements available. Floral arrangement ही चाह रहे हैं. Basically, it's a निकाह cake. तो उनकी थीम जो है इट्स गोल्ड, पिंक, वाइट, रेड. तो वी हैव टू वर्क अराउंड दैट. The cake itself is pink and we're going to go ahead and add our floral arrangement to it. चलते हैं. सबसे पहले on top I'm going to put these big flowers. I think I'll just put one here on top. अच्छे से place कर लेना है. I've washed and cleaned my flowers beforehand because I don't want any kind of cross contamination going on. First flower placement हो गई है. Now I'll go ahead and add the other flowers. Pink से शुरू करते हैं since that is the theme. तो insert करेंगे. क्योंकि हमने एक फॉल बनानी है towards the bottom, तो उस हिसाब से हम इसे लेके आएंगे पैटर्न को नीचे की तरफ. आई एम यूजिंग टूथपिक ताकि जो है वो फ्लावर इटसेल्फ बड़ा सा होल ना करे बीच में, ब्रेक ना कर जाए और उसके जो लिक्विड्स हैं वो केक के अंदर ऐड ना हो जाए. तो तरीके से ज़रा टूथपिक इंसर्ट करके यू मेक स्पेस फॉर द फ्लावर एंड देन यू गो अहेड एंड प्लेस द फ्लावर ओवर देयर. It will come together as we go. It doesn't look like much right now because अभी तो हम सिर्फ प्लेसमेंट कर रहे हैं. डिज़ाइन बनते बनते चेंजेस भी होते रहते हैं एंड इट कम्स टुगेदर वेरी नाइसली इंशाल्लाह. काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप टियर केक कैसे स्टार्ट करते हैं. तो अ वीडियो फॉर दैट इज़ कमिंग सून टू. मैं मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं आज ही करूं, लेकिन सिंस द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट तो मुझे था कि जी के दैट वुड बिकम टू मच ऑफ अ हैसल फॉर मी. बेकरी रन करना इज़ नॉट दैट ईजी. यू हैव टू वर्क आउट सो मेनी किंग्स और ये बड़ी मुश्किलों से मुझे टाइम मिला है तो मैं कर रहा हूँ. मुझे बस ये था कि लोगों को जो है एक एस्थेटिक सेंस का आइडिया हो जाए कि हाउ डू यू डेवलप एन एस्थेटिक सेंस एंड हाउ डू यू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स. Now we'll stop with the pink flowers and we'll go ahead with the reds and whites, and then we'll come back with the pink flowers and we'll add them जिधर aesthetically मुझे बेहतर लग रहे होंगे. आपके साथ साथ ही हूँ मैं जर्नी हमारी ये केक डेकोरेटिंग की. Along the line में pricks कर रहा हूँ थोड़े बहुत. ताकि इंसर्शन में मुझे मसला ना हो. Red flowers add हो रहे हैं. Color has been started to add to the cake. Honestly, this color combination is very classic. It looks very beautiful, very majestic too for a nikah cake, for a wedding cake. It's a very beautiful and classy combination. I think it's gonna look very pretty at the end.
We'll go ahead with the white flowers. अजान हो रही थी इस वजह से with respect to that I didn't speak. Macaroons ऐड करना शुरू किए हैं and it has started to come together very nicely, very beautifully. I'm just loving the way it looks. Inshallah, who it's for, they'll love it too. Macaroons ऐड करते हैं. Basically, this design is inspired by someone. So just to add my own touch, I added these macaroons and I'll do a little splash of gold as well in the end to just make this design my own, and I don't want it to look like a rip-off. Because the customer sent it to me, I had to abide by their recommendations and their wants and needs because customers come first, obviously. So, but I just had to make it my own by adding a few different elements and making it my way. It's not finished yet, but I just want you guys to take a look at how it looks right now. Further, जो हमारे पास remaining flowers हैं, वो ऐड कर लेते हैं और macaroons. Since I'm on time crunch, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से wind up कर रहा हूँ. जुम्मा भी है, जैसे कि आपने सुना कि जुम्मे की अजान हो रही है, तो जुम्मा भी पढ़ना है, तो इस वजह से आई एम जस्ट हरिंग दिस अप, जल्दी जल्दी हो जाए हमारा ये प्रोसेस. Adding the final flowers.
We'll now add the remaining macaroons and finish the cake. जहाँ भी लगे आपका डिजाइन थोड़ा monotonous हो रहा है, just go ahead and add a few more elements to it to fill that area up. जैसे कि for example, I think this spot looks empty. I'm just gonna go ahead and add another rose to it. And now, just a small little thing makes a lot of difference in completing the whole look of the cake. Now we're gonna go ahead. I have some buds right now, rose buds that I'm gonna add all around the cake. Okay? And then we'll add the baby's breath, and the cake would be ready. Just adding adding the buds here and there to fill up some spaces that are left behind. Inserting the toothpick as I go to make space, make room for these buds. अब हम बेबी स्प्रेड ऐड करेंगे and we'll be done with the cake. Scissor. Scissor यूज करेंगे और bunches बना लेंगे इस तरह, and we'll start inserting them here and there. इस तरह 2-3 stems लेके we'll make a few bunches and we'll start adding them here and there. सिर्फ उनकी edge sharp करने के लिए we're just gonna go ahead and use the scissor. This takes a little bit of time, but
Be patient and wait for the end result because it's gonna look so beautiful. Bunch it up and then cut it at an angle so it's easy to insert inside of the cake. Like that. आपने ये अपनी मर्जी से लगाने हैं जिधर आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे, जिधर आपको लगे कि खूबसूरत लग रहे हैं, इट मेक्स सेंस। उस हिसाब से हम इसको नीचे साथ साथ लेके जाते जाएंगे, फॉल के साथ नीचे तक बांच लेंगे, कट करेंगे, लगाते जाएंगे, and soon we will be finished with the cake. So annoying. It's so annoying when your neighbors look at you while you're working. It's kind of annoying and awkward as well. Uh, my kitchen window is right next to my next door neighbor's house, and they can stare into the kitchen. And I needed the daylight. See, वजह से I have the curtains up right now, so it's kind of awkward and embarrassing. They're gawking at the cake. Oh my god! Keep filling the whole thing up as we go. I think it has started to come together, and I think it looks phenomenal. Whoever watches this video, do let me know what you think about this cake. I'm not yet done, just adding a little bit more touches, and then I'll be done and I'll show you how it looks. Final results, final reveal, basically. Last of the baby's breath. And we are done. A little bit more gold. I'll just splatter a few sprinkles here and there just to cover up
and make it look beautiful. A little bit of gold never hurt no one, so splatter of gold is always a good idea. And I am done. This is how the cake looks. I hope you guys like it. Do let me know in the comments below what you think about it and what more do you want me to do. I would always love to do what you guys want me to do. And here's the cake. How gorgeous does this look? I'm in awe. I'm so happy with the way this turned out. I hope you love it too. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.